Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the organ system level as well as the individual level. So let's move to the class board. So dear students, levels of biological organization, and we have studied up to number 1, atomic and subatomic level. Number 2, the molecular level. Number 3, we have discussed the cell and organelle level. Number 4, we have discussed the tissue level. Number 5, we have discussed the organ level. Now the students, the second part of this fifth level is organ system level. Now the organ system level. So that is the part of the fifth level. So dear students, electrons, protons, neutrons, they arrange in a particular way and they form a undivisible or non-divisible particle, the smallest particle of a pure substance, that is called as atom. Two or more than two different or similar atoms, they join or they link or they combine chemically to form a molecule by the help of chemical bonds like the ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, or the metallic bond. The micro and macromolecules, they arrange themselves in a particular way and they form the cell organelles, and the different cell organelles or the subcellular structures, they assemble together in a particular way to form a cell, and each cell has its own function. And similar type of cells arranged in the form of loose bundles or sheets, they form a tissue, and two or more than two different tissues performing the related function forms a structure which is known as organ. And now two or more than two different organs but performing a related function is called as organ system level. Clear? So, two or more than two different organs performing related function forms an organ system. क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि एनिमल्स के अंदर ऑर्गन लेवल वेल डेवलप्ड, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, जबकि प्लांट्स के अंदर वो लेस डेफिनेट है. क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन लेवल ही लेस डेफिनेट है, तो उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो बहुत ही लेस डेफिनेट, जिसको हम कहते हैं ना होने के बराबर होता है. या आप ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता.
जबकि एनिमल्स के अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम लेवल्स मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताता चलूँ कि जो ह्यूमन बींग्स की, एज वी आर ह्यूमंस एंड वी आर द बेस्ट क्रिएशंस ऑफ Almighty Allah, so we are provided with various organ systems. So we have got, तो इसके एग्जाम्पल्स में हम इंक्लूड करेंगे example of organ system. Clear? Examples. So if you talk about the humans, so humans have got number one, the nervous system. They have got the digestive system. They have got the visual system. For vision, they have got the hearing system. Clear? They have got the reproductive system. They have got digestive system. They have got the urinary system. They have got the integumentary system. They have got the muscular skeletal system. They have got the reticular endothelial system. And the students, they have got the cardiovascular system. They have got the immune system. They have got the lymphatic system. They have got the endocrine system. Clear? So these are the major organ systems which are present within the human body. Clear? तो हर एक organ system के अंदर मुख्तलिफ organs हैं जो कि मिलकर related function perform करते हैं उस organ system का। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो ऑर्गन स्टडी किया था वो था स्टमक। तो आइए उसी से रिलेटेड एक ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक द डाइजेस्टिव सिस्टम। इंशाल्लाह वी विल लर्न इन डिटेल्स इन चैप्टर नंबर 12 द न्यूट्रिशन के डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, ये कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द ओरल कैविटी और माउथ। क्लियर? और फिर ओरल कैविटी और माउथ से फिर फेरिंक्स,
then from pharynx to the esophagus, esophagus के बाद stomach, stomach के बाद small intestine, small intestine के आगे further 3 parts, the duodenum, jejunum, ileum, और उसके बाद फिर large intestine के अपने further parts हैं. It starts from the cecum, cecum के साथ attached है worm-like appendix, और फिर उसके बाद colon, colon के फिर आके मुख्तलिफ parts, the ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, and finally it ends into rectum and anus. So these are the major primary organs of the digestive system. और digestive system का क्या function है dear students? कि जो highly complex और insoluble non-diffusible particles होते हैं उनको सिंपल डिफ्यूजिबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना और जो वेस्ट है डाइजेस्टिव वेस्ट उसको बॉडी से रिमूव करना, दैट इज द मेजर फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच इज अकॉम्प्लिश्ड बाय ऑल दीज ऑर्गन्स व्हिच हैज बीन लिस्टेड इन प्रीवियसली. इसी तरह से इफ वी टॉक अबाउट वन मोर इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. If you talk about the respiratory system, it starts from the nose, from nasal cavity, then pharynx, then glottis, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchioles, then alveolar duct, and at the end of the alveolar ducts, there are air sacs, and in the air sacs there are microscopic alveoli. Clear? So this is the respiratory system. इसी तरह से urinary system, it consists of pair of kidneys. Clear? Which is connected to a pair of which are connected to the pair of ureters, which both the ureters they empty into the urinary bladder, and the urinary bladder it empties to the outside by a duct which is called as urethra. So that is the urinary system. So this is how the organ system is formed, my dear students. Clear? So dear students, this is the organ system level. Hopefully आपको clarify हो गया. अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, नंबर 6, दैट इज इंडिविजुअल लेवल. क्लियर? या फिर उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल. It is also called as organism level. Clear? So dear students, different organs in plants में मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो थोड़े बहुत हैं उनके, एंड डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स. ये बात जरा क्लियर कट समझनी है. ऑर्गन सिस्टम लेवल्स इन एनिमल्स perform related function and makes an individual or an organism. क्लियर? तो प्लांट्स में मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उससे एक इंडिविजुअल बनता है या ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम प्लांट कहते हैं. और एनिमल्स में डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, जैसे कि ये 15 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स, 15 मेजर ऑर्गन सिस्टम्स मैंने गिनवाए जो कि ह्यूमंस के हैं. तो ये मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी में रखे, ये मिल करके किसको जिंदा रख रहे हैं? मुझे, द ह्यूमन बीइंग. क्लियर? द एनिमल. तो
तो उसको डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम लेवल्स इन एनिमल्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन, ये रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करें ताकि मैं जिंदा रह सकूं, मैं बोल सकूं, मैं चल सकूं, मैं भाग सकूं, मैं दौड़ सकूं, मैं जो है वो सो सकूं, मैं बोल सकूं, वट एवर इट इज। तो ये सारे फंक्शंस, ये रिलेटेड फंक्शंस कौन परफॉर्म करवाने में हेल्प कर रहा है? ऑल दीज ऑर्गन सिस्टम्स। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि the processes and the activities and functions in animals are coordinated. They are coordinated. मतलब कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर परफॉर्म होते हैं। जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, जो फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड हैं। मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ और वो प्रोसेस या वो एक्टिविटी या वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक बात है ऑर्गेनिज्म की, होल ऑर्गेनिज्म, चूँकि हम ऑर्गेनिज्म लेवल पढ़ रहे हैं, सो देयर इज इंडिविजुअलिटी एज फार एज द कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसर्न्ड। जब हम एक इनफरादियत की बात करते हैं, जब हम एक पूरे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इनफरादियत मौजूद होती है उसकी खसूसियात की। क्लियर? और डियर स्टूडेंट्स, एक जो ऑर्गेनिज्म है, जो एक इंडिविजुअल है, जो एक मेंबर है अपने दूसरी स्पीशीज़, जो सेम स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं दूसरे, उनसे वो अलग होता है। उसके करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, वो खसूसियात उनकी मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि अगर हम इंसानों की बात करें, लाइक मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ और आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो मेरे करैक्टरिस्टिक्स और आपके करैक्टरिस्टिक्स बिल्कुल एक जैसे नहीं हो सकते। तो मेरे अंदर कुछ अलग खासियत है, आपके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ अलग से खासियत रखी होंगी। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स। सो एज फार एज the whole organism is concerned, and there is individuality in the characteristics. Clear? And the individual or the organism, it differs in various respects from the members of the same species. Clear? और dear students, जो processes हैं, the processes or the activities or the functions in animals, they are coordinated. वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर के सारे functions perform होते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहां पर कोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर रनिंग, अब भागने के लिए, भागना अगर देखा जाए तो एक बहुत सादा सी बात है, और हमें लगता है कि शायद भागने में हमारे सिर्फ पाँव या हमारी टांगें हमारे काम कर रही हैं। क्लियर? सो हमारी यानी पाँव और टांगों में मतलब कि हमारे मसल्स और हमारी बोन्स। तो ना सिर्फ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर, सो देयर इज इन्वॉल्व फॉर रनिंग, देयर इज इन्वॉल्व्ड, क्या क्या इन्वॉल्व है? नंबर 1, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम भागने में हमें क्या मदद देता है? सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एट अ रैपिड रेट। क्लियर? ताकि एसिडोसिस ना हो जाए हमें कहीं। इसी तरह से द CVS, the cardiovascular system, अब ये भी तेज हो जाएगा। ठीक है? और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भागते हुए आपको पता है हमारे जो सांस है वो तेजी से हम लेते हैं। ठीक है? तो वो रेस्पिरेटरी रेट हमारा जो कि नॉर्मल 15 से 20 होता है, इट में गो फ्रॉम 30 to 40 per minute. Clear? During the running.
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो भी क्या करेगा, इट विल स्टार्ट बीटिंग एट लाइक मोर देन 90 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली हमारा जो एक हार्ट रेट होता है वो 70 to 80 होता है, ठीक है। एक मिनट के अंदर हमारा दिल 70 से 80 दफ़ा धड़कता है। जब हम भागेंगे तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, हमें ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। मिनट्स फॉर सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज टू द मसल्स, ताकि वो मसल्स को एनर्जी चाहिए तो उसके लिए ग्लूकोज भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीडाइज होगी तो तभी उससे एटीपी बनेगी। क्लियर? तो हमारा रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हुआ, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसी तरह से देयर इज इन्वॉल्व अ थर्ड सिस्टम दैट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या कर रहा है, एक तो हमें सपोर्ट कर रहा है खड़े होने में, अपना पोस्चर मेंटेन करने में, ठीक है, और प्लस दे हेल्प इन लोकोमोशन, वो हमें मूव करवा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं तो मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज थ्री सिस्टम्स आर इन्वॉल्व्ड। तो यहां पर अभी बात खत्म नहीं हुई है, फिर इसके साथ और क्या कोऑर्डिनेशन होगा भागते हुए। आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होने वाला भागते हुए डियर स्टूडेंट्स, देयर इज इनहिबिशन ऑफ डाइजेशन, देयर इज इनहिबिशन ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन का अमल भागते हुए कुछ देर के लिए रुक जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई उन ऑर्गन्स की तरफ या उन मसल्स की तरफ पहुंचाई जाए जो कि भागने में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लियर? इसी तरह से हमारा नर्वस सिस्टम, वो इन्वॉल्व होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जल्दी मैसेजेस नर्व इंपल्सेस सेंड किए जा सकें, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट, ताकि कोऑर्डिनेशन हो सके, कोऑर्डिनेट बिटवीन मसल मूवमेंट्स, उनको कोऑर्डिनेट करना, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, हेड की पोजीशन को मेंटेन करना। क्लियर? सो दिस इज हाउ जस्ट एक सिंपल रनिंग के लिए, भागने के लिए या जॉगिंग के लिए इतने सारे सिस्टम, आपका विजुअल सिस्टम आपको दिखा रहा है कि आगे कोई खड्डा या कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है, आपका हियरिंग सिस्टम, वो कोई खतरनाक साउंड किसी जंगली जानवर कोई आपकी तरफ भागता हुआ तो नहीं आ रहा, या उसकी आवाज़ तो नहीं आ रही। क्लियर? सो या कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कोई फायरिंग की आवाज़ तो नहीं आ रही। तो ये मुख्तलिफ तरह के सिस्टम्स ये सिर्फ रनिंग में इन्वॉल्व होती है। मतलब कि ये सारे मिल करके देयर इज़ अ डिविजन ऑफ लेबर, देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे कि सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स में डिवीजन होती है एक सेल को जिंदा रखने के लिए, इसी तरह से ये ऑर्गन सिस्टम्स में डिवीजन है और ऑर्गन्स में डिवीजन है एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए। इज दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब डियर स्टूडेंट्स याद रखते हैं एक और बात कि द कोऑर्डिनेशन in animals में कोऑर्डिनेशन जो है is brought by number 1 the nervous system and number 2 the endocrine system। नर्वस सिस्टम में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मिल करके काम करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ है। जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ से मैसेज आ रहे हैं, इफेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं और इसमें दरमियान में कोऑर्डिनेटर्स वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दोनों के साथ,
और एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए यानी केमिकल्स के जरिए भी बाय रिलीजिंग हार्मोन्स भी जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाता है, जैसे कि मुख्तलिफ तरह ग्रोथ के अंदर, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग spermatogenesis, during oogenesis, during the formation of thyroid glands, etc. everything clear. तो एनिमल्स में दो तरह की कोऑर्डिनेशन है जो कि आप सेकेंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 17 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन। क्लियर। तो नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व है। जबकि प्लांट्स में डियर स्टूडेंट्स द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, चूंकि उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता, ठीक है, और उन्होंने कोई मूव भी नहीं करना होता अपनी जगह से, अपने मतलब एक जगह छोड़कर दूसरी जगह तो नहीं जाना होता। आपने कभी देखा है कि आप जो आपके घर में तो दरख्त लगा या जो पौधा लगा है वो चल के कहीं साथ वालों के घर चला गया हो या वो सड़क पे चला गया हो, ऐसा नहीं होता ना, बिकॉज द प्लांट्स डू नॉट लोकोमोट यूजुअली। सो द कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज ब्रॉट बाय chemical कोऑर्डिनेशन। उनमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेशन है, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, बाय द रिलीज ऑफ हार्मोन्स। इनके अंदर भी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज किए जाते हैं, लाइक द ऑक्सिन्स, लाइक जिब्रेलिन्स, like cytokinins, etc. So these are the plant hormones which are involved in the long-term regulation. क्योंकि इनको immediately कोई एक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सो आमतौर पर इनकी जो रेगुलेशंस लॉन्ग टर्म होती हैं और वो किसके ज़रिए होती हैं, इनकी केमिकल कोऑर्डिनेशन के ज़रिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके ज़रिए हो रही है, एंडोक्राइन। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, जबकि प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। सो ऑर्गेनिज्म वर्क्स एज अ होल, एक बात याद रखनी है, द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म लेवल पढ़ रहे हैं, वर्क्स एज अ होल एंड responds to external stimuli or conditions as a whole. तो ऑर्गेनिजम्स जब भी काम करते हैं तो एज अ होल, यानी मैं काम कर रहा हूं तो ऐसा नहीं कि मेरी बाजू कोई और काम कर रही है, मेरे टांग कोई और काम कर रही है, तो मैं एज अ होल एक काम करूंगा। आई एम एन इंडिविजुअल, मेरे अंदर इंफरादियत है। क्लियर। आई एम एन ऑर्गेनिज्म। और डियर स्टूडेंट्स, जब भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा तो तब भी मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्ड करूंगा, मतलब कि अगर मुझे ठंड लग रही है तो मेरी पूरी बॉडी को ठंड लगेगी, ठीक है। अगर मुझे बुखार हो रहा है तो मुझे पूरी बॉडी को बुखार फील होगा, अगर दर्द का एहसास होगा, पेन का एहसास होगा, तो पूरी बॉडी को दर्द का एहसास होगा। क्लियर। सो दिस इज हाउ द ऑर्गेनिज्म वर्क्स एज अ होल एंड रिस्पॉन्ड्स टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई एज अ होल। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।